Bells Overseas, the sound of your future. Hello everyone, this side Pankhudi from Bells. I welcome you all to my channel. So today we are going to learn what is IELTS. IELTS होती है International English Language Testing System. IELTS की फुल फॉर्म क्या है? International English Language Testing System. ये आइल्स का टेस्ट होता किस लिए? ये उन बच्चों के लिए या फिर उन कैंडिडेट्स के लिए जो बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं फॉर पीआर पर्पसेस या फिर जो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं. ये बेसिकली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है. ये वो बच्चे देते हैं जो शिफ्ट या जो पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में. अब आइल्स होती है दो टाइप्स की, जिसको हम कहते हैं जनरल आइल्स और एकेडमिक आइल्स. जो जनरल आइल्स होते हैं ये वो बच्चे देते हैं जो पीआर के लिए जा रहे हैं, और एकेडमिक वो देते हैं जो स्टडी पर्पस के लिए जा रहे हैं. सो यू शुड नो बिफोर टेकिंग एग्जाम which kind of IELTS or which type of IELTS is suitable for you. So IELTS consists of 4 modules, that is writing, reading, listening and speaking can be conducted 7 दिन पहले या 7 दिन बाद एग्जाम की ओरिजिनल डेट से. फॉर एग्जाम्पल, you are giving your exam on 20th of November. So speaking can be conducted 13 November to 19 November or 21 November to 27 November. There are very slim chances कि आपके same day speaking हो जाए जिस दिन आपका पेपर है, but there are chances. Okay? So IELTS कब होती है? या 7 दिन पहले या 7 दिन बाद आपके ओरिजिनल टेस्ट डेट से. So the sequence for IELTS has recently changed, that is 25 June 2020. पहले होता था listening, reading, writing, but now it is writing, reading and listening. And for those students who are preparing for CD IELTS or who want to give CD IELTS, the sequence is same as it was first, that is listening, reading, writing. ये उन बच्चों के लिए जो पेन एंड पेपर बेस्ड IELTS दे रही हैं. So, as you know that there are 4 modules in IELTS test, that is listening, reading, writing and speaking. So first we are going to learn what is listening. Listening होती क्या है? Listening अंदर 40 क्वेश्चन होंगे हमारे उसके अंदर, क्वेश्चन बुकलेट के अंदर 40 मिनट्स होंगे. हमें 40 मिनट्स में 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड 4 सेक्शन होंगे. Now 40 minutes are divided into 2 parts, that is 30 minutes for the audio and 10 minutes time is given to you to transfer your answers from your question booklet to the answer booklet which will be provided to you in your exam. So होता क्या है, 30 मिनट्स हमारी ऑडियो चलती है, हम अपनी ऑडियो सुनते हैं और सुनकर अपने आंसर्स हम अपनी क्वेश्चन बुकलेट पे लिख लेते हैं. अगर हो सके तो आई विल रिकमेंड कि आप सीधा अपने आंसर्स अपने आंसर बुकलेट में ही लिख लो. अगर नहीं लिखे जाते सो इट इज ओके टू राइट इन योर क्वेश्चन बुकलेट. सो you will be writing in your answers in the first 30 minutes either in your answer booklet or in your question booklet, and then so they will give you time to transfer your answers from your question booklet to the answer sheet and that is 10 minutes. Okay, so हर एक section में, that is 4 section, हर एक section में आपको 10 questions होते हैं. So section 1 contains 10 questions, section 2 contains from 11 to 20, section 3 21 to 30 and section 4 31 to 40. Now the difficulty level varies, or I can say difficulty level increases as you go on doing your section. Section 1 will be the easiest, whereas section 4 will be the toughest. So you need to practice a lot because it is a multitasking section. You have to listen, you have to read and you have to write. So be very particular in it and be very attentive. जैसे आपका ध्यान हट गया आपके 2-3 आंसर छूट जाएंगे. सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि जब भी आप लिसनिंग कर रहे हो आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना कि आसपास क्या है. आपने अपनी लिसनिंग समझ के ध्यान से करनी है और आपको एक्सेंट्स पता होने चाहिए जो लिसनिंग में आएंगे. क्योंकि लिसनिंग ये नहीं होता कि सिर्फ एक बंदा ही बात कर रहा है. नो, it is a combination in which you will learn, you will get to know or you will listen 1 person talking, 2 person talking or even 3 person talking. So you need to be very very attentive doing listening. So moving towards next, that is reading.
Now what is reading? लिसनिंग जो जनरल के लिए होती है और आइल्स अकेडमिक के लिए होती है, दोनों के लिए सेम होती है, बट नॉट इन द केस ऑफ रीडिंग. रीडिंग इज डिफरेंट फॉर अकेडमिक आइल्स एंड जनरल ट्रेनिंग आइल्स. रीडिंग क्या होती है? 40 क्वेश्चंस होंगे दोनों अकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग, 60 मिनट्स होंगे दोनों में, जनरल एंड अकेडमिक. नाउ द मेन डिफरेंस इज इन द पैसेज. In academic, you will get 3 passages, 3 long passages, in which you have to solve and give your answers. It can be 13, 14 question, like in 13 question passage 1, 13 question passage 2, and in the last you will get 14 question. But in general training, you will get in passage 1 you will get 2 text for which you have to give the answer. It won't be lengthy passage or lengthy paragraphs. It will be very short paragraphs from which you have to find your answers. Okay, so I hope this is clear to you. And जो रीडिंग होती है, जैसे मैंने लिसनिंग की बात की, उसका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता रहता है. सेम गोज फॉर रीडिंग, इसका भी डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता है. लाइक पैसेज 1 विल बी वेरी इजी, whereas passage 3 will be toughest. So I will recommend everyone to ट्रांसफर योर आंसर्स साइमल्टेनियसली. मतलब ये मत करना कि पहले क्वेश्चन पेपर पे लिखना फिर अपने आंसर शीट पे लिखना. नो, इट इज बेटर इफ यू राइट योर आंसर स्ट्रेट वे टू द answer sheet, because in this you won't get extra time that you will be getting in listening. So it's my advice to everyone, instead of transferring your answer to the question booklet, you need to transfer your answers to the answer booklet directly. It will save your time. So moving towards the next, that is writing. So writing is also different in IELTS academic and IELTS GT, unlike speaking and listening. सो राइटिंग में क्या होता है? राइटिंग 60 मिनट्स की होती है, दोनों जनरल ट्रेनिंग और अकेडमी के लिए. दोनों में दो टास्क होते हैं, दैट इज टास्क 1 एंड टास्क 2. सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? इन जनरल ट्रेनिंग यू विल गेट लेटर. In general training, you will get later in task 1. It can be formal, it can be informal, or it can be semi-formal. But in academic, you will write a report on a chart. Now, chart can be a bar chart, a line chart, a map, a process, anything. And you have to write at least 150 words in task 1, and in task 2, you have to write at least 250 words. You can give 20 minutes to task 1, whereas in task 2, you can spend 40 minutes. In task 2, you will be getting essay in both general training and in academic. दोनों में ही आपको essay आएंगे. So essay can be advantage, disadvantage essay, discussion essay, causes solution essay, agree or disagree essay. Okay, so I hope this is clear. Moving towards next, that is speaking. Speaking is same for general training and academic. Speaking consists of 3 parts and it is of 11 to 14 minutes. So first part is general question. Now what is general question? General question में आपसे आपके बारे में पूछ सकती है, आपके सराउंडिंग के बारे में पूछ सकती है. For example, where do you live? What is your favorite color? Okay, do you like looking yourself in the mirror? So it can be about you or your surrounding. Whereas in cue card will be a 2 type. There are 2 types of cue card, like a descriptive cue. So in cue card, you will get a situation. It can be a situation based cue card, or you can be given a cue card to describe someone or something. Like I will say, describe an old person you know and respect. Who the person is, how do you know him or her, and why do you respect him or her. Okay, so I will be giving you 1 minute to prepare and you have to speak for 2 minutes. I hope this is clear. Moving toward next part, that is follow-ups. Follow-up can be anything. I can ask on any topic or I can ask related to the cue card. So you should be very much prepared in speaking section. So I hope this video is very useful for those who are planning to give IELTS or planning to prepare for their IELTS. And if you have any query related to IELTS, PT, study visa, do drop a comment in our comment section. Thank you everyone.
Do share, follow and come back for another informative videos. Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.